फर्स्ट टाइम है फाइट करना और सस्पेक्ट Thank you. Now Ibrahim versus Rayan. Wow, for that performance, champion, future champion. Come on. सर मुझे लगनी नहीं चाहिए ये जो आपके चैंपियन है ना मैंने इनकी देखी है परफॉर्मेंस हमजा वेरी गुड क्लैपिंग ये नंचक से मार्शल आर्ट्स का सबसे इनिशियल वेपन कहलाता है नंचक जो दो स्टिक्स पे होती हैं ब्रूसली का बेहतरीन वेपन है ये ब्रूसली ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इसे और ये डेमो लेने के लिए आ रहे हैं फर्स्ट टाइम इन्होंने परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर नाउ स्टार्ट Oh wow जबरदस्त परफॉर्मेंस ओह जरा भी तो थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज सारे बच्चे थोड़ा स्टेज से पीछे हो जाइए Stop. जबरदस्त परफॉर्मेंस क्लैपिंग करो नाउ सेल्फ डिफेंस के लिए मनाल आ जाएं और जवेरिया आ जाएं मनाल वर्सेस जवेरिया इन्होंने बहुत शॉर्ट और बहुत ज़बरदस्त एक सेल्फ डिफेंस बनाया है जो आपके सामने परफॉर्म करेंगे ये एक टेक्निक है सेल्फ डिफेंस की एक छोटी सी टेक्निक है कि हेयर को जब पकड़ा जाता है तो उसको किस छुड़ा सकते हैं ये यहाँ पे परफॉर्म करेंगे Now let's start Mannan. Abdul Mannan Sheikh जिम्नास्टिक के लिए आ जाए और नंचक्स के लिए आ जाए अब्दुल मन्नान शेख नेशनल प्लेयर है अभी लास्ट टाइम इंटर कलर में इन्होंने 37 सेकंड्स में नॉकआउट मारा है फाइट में 37 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फाइट के लिए 3 मिनट की फाइट होती बट इन्होंने 37 सेकंड्स में परफॉर्म किया सबसे पहले ये जिम्नास्टिक के कुछ स्टेप्स करके दिखाएंगे फिर उसके बाद ये वेपन करके दिखाएंगे हमें ऐसे स्टार्ट Thank you, good, very good. Now let's Mohammad Khizar and Khizar Mannan fight कर रहे हैं.
सो फर्स्ट यहाँ पे ये न्यू बैच है जो ये परफॉर्म कर रही है, फाइट को परफॉर्म कर रही है। ताइक्वांडो की फाइट में सबसे ज़्यादा किक का इस्तेमाल है। हम किक परफॉर्म कर रहे होते हैं इसमें अपर बॉडी को। गुमान मीन्स स्टॉप है, यानी कि अब फाइट नहीं होगी। तो नाउ ब्रेकिंग परफॉर्म करेंगे। लास्ट एक्ट है हमारा तो ब्रेकिंग है, जो अब्दुल मन्नान, समीर अहमद, सॉरी मैं सॉरी करती हूँ कि सच्चे के लिए मैं कह रही हूँ बच्चों को थोड़ा थोड़ा गुस्से हो जाना, बच के रहना रे बाबा। फाइका जम ड्रॉप कीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्ट डेमो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों की क्लैपिंग बताएगी कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई।